Cost of pollution? Faisal Bari. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 20th, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. Over the last 7 months or so, our daughter has been unwell a number of times. The usual symptoms have been high fever and a cough. A couple of times the fever and cough went away after a week with only cough syrups and anti-fever medicines, but a few times she had to go through a course of antibiotics before she started to get better. The cough seems to linger on longer. She has also been on anti-allergy medications for extended periods over this time. This is not an atypical experience. In our daughter's class in school, many children have been going through the same thing over the past many months. A lot of children have missed school for many days, largely due to cough and fever. The cost of missing school, aggregated across millions of children living in Lahore alone, is staggering. Add to it the health cost and the possible impact on the future health and well-being of all children, and the situation looks very alarming. On any typical day when I have gone to drop our daughter to school, there are a couple of children in her class who have a cough but are still at school. Again, a lot of friends have been telling me, this is not out of the ordinary at all. A lot of children have been a lot sicker over this winter in particular, but it started well before the cold season. There has been some acknowledgement of the issue from the government side as well. Schools were shut down on Fridays to reduce the exposure of children to smog and pollution. Winter vacations were also extended by a week or so, and one of the reasons given for it was the smog. Social media keeps telling us that the cost of living in a high-pollution environment is actually much greater than just being sick. It reduces life expectancy, and it also reduces the IQ of children exposed to it for extended periods. Exact estimates for these impacts could be difficult to work out, as they may depend on exposure levels and many other factors, but the fact alone that these impacts are there is scary enough. But there has been little action on the part of the government, beyond some acknowledgement, to address the issue so far. A friend, who is living in Beijing currently, was telling me how the city had much higher pollution levels a decade ago, but, today, though it is still not where it wants to be, the city has been cleaned up a lot and has much better air quality than Lahore. The government implemented a fairly drastic cleanup program to start the process. The measures included, among others, moving away from coal heating, moving factories away from the city, enforcing very strong emission standards, monitoring standards and imposing heavy penalties in cases of non-compliance, and moving public transport to lower emission options. It took years of consistent, persistent and high-priority action for Beijing to get better quality air. By some estimates, the city has now added at least a couple of years to the life expectancy of city residents. I have not seen estimates of changes in health costs, but the life expectancy estimates are indicative of the cost savings on the health side as well. This is one area where we do not really have private solutions available to citizens of Lahore. Those who can afford to, can put air purifiers in their homes and cars, but can you restrict the movement of children and adults to buildings and cars only? Not really. Those who can move, could shift to other cities for high pollution periods of the year or have their children move during those times, but A, how many can afford such solutions, and B, these solutions are not very practical given the demands of schooling and work, etc. So, there is little that individuals can do in this case, unlike, say, what happens in cases of problems concerning the provision of healthcare, schooling, and even drinkable water. In these cases, those who can, may move to private provision in the form of private hospitals, private schools and bottled water, but we are still some distance away from private breathable air solutions. Hopefully, rather than force people to go in that direction, the government will spring into action and provide public solutions for all. Short-term and stopgap arrangements like closing down schools and or forcing offices to use more work-from-home programs are not going to be enough to change things. These might be good band-aids and even allow the government some space,
but they cannot be a replacement for a worked-out long-term plan that needs to be strictly implemented and monitored. It should also be borne in mind that not doing anything at this stage is tantamount to making the situation worse. More factories will keep opening, more vehicles will keep coming on the roads, and pollution will not only continue but increase over time. This is known to the government. If, even after knowing this, the local administration, provincial government and federal government do not do anything, it would be akin to murder. They would be killing the citizens of Lahore. Until the government gets serious and works out an effective strategy and starts implementing it well, the citizens of Lahore and other polluted areas of the country will continue to pay a heavy price. The price is much higher for children, of course, but this price, eventually, will be borne by the entire nation in terms of lower life expectancy and higher health and other costs. So far, the government has been fairly complacent on the issue and has only announced cosmetic and superficial actions. We need much deeper and drastic actions. But will any government be willing to pay the political cost of such actions and be competent enough to manage their effective implementation? The writer is a senior research fellow at the Institute of Development and Economic Alternatives, and an associate professor of economics at LUMS. Published in Dawn, January 20, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पिछले 7 महीनों में हमारी बेटी कई बार बीमार रही है। आम अलामात तेज बुखार और खांसी हैं। 1 हफ्ते के बाद बुखार और खांसी सिर्फ खांसी के शरबत और एंटी बुखार की दवाओं के साथ दूर हो गई, लेकिन कुछ बार उसे ठीक होने से पहले एंटीबायोटिक्स के कोर्स से गुजरना पड़ा। ऐसा लगता है कि खांसी ज्यादा देर तक रहती है। वो इस अरसे के दौरान तवील अरसे तक एंटी एलर्जी अद्वियात भी ले रही है। ये एक गैर मामूली तजर्बा नहीं है। हमारी बेटी की क्लास और स्कूल में पिछले कई महीनों से बहुत से बच्चे इसी चीज से गुजर रहे हैं। बहुत से बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं जा सकते हैं, जिसकी बड़ी वजह खांसी और बुखार है। सिर्फ लाहौर में रहने वाले लाखों बच्चों पर मुश्तमिल गुमशुदा स्कूल की कीमत हैरान कुन है। इसमें सेहत की लागत और तमाम बच्चों की मुस्तकबिल की सेहत और फलाह व बहबूद पर मुमकिना असरात शामिल हैं और सूरत हाल बहुत खतरनाक नजर आती है। किसी भी आम दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता हूं, तो उसकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें खांसी होती है, लेकिन वो अब भी स्कूल में हैं। एक बार फिर बहुत सारे दोस्त मुझसे कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी गैर मामूली नहीं है। खासतौर पर इस मौसम सरमा में बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हुए हैं, लेकिन यह सर्दी के मौसम से बहुत पहले शुरू हुआ था। हुकूमत की तरफ से भी इस मसले का कुछ एतराफ किया गया है। बच्चों को स्मोग और आलूदगी का सामना कम करने के लिए जुमा को स्कूल बंद कर दिए गए थे। मौसम सरमा की ततीलात में भी 1 हफ्ते की तौसी की गई थी और उसकी एक वजह स्मोग बताई गई थी। सोशल मीडिया हमें बताता रहता है कि आला आलूदगी वाले माहौल में रहने की कीमत दरअसल सिर्फ बीमार होने से कहीं ज्यादा है। ये मुतवक्के उम्र को कम करता है और तवील अरसे तक इसके सामने आने वाले बच्चों के IQ को भी कम करता है। इन असरात के लिए दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो एक्सपोजर की सतह और बहुत से दीगर अवामिल पर मुनहसर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये हकीकत के ये असरात काफी खौफनाक हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक इस मसले को हल करने के लिए बहुत कम कार्रवाई की गई है। एक दोस्त जो इस वक्त बीजिंग में मुकीम है, मुझे बता रहा था कि किस तरह 1 दहाई पहले शहर में आलूदगी की सतह बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज अगरचे ये अब भी वहां नहीं है जहां वो होना चाहता है। शहर को बहुत साफ किया गया है और लाहौर से कहीं बेहतर हुआ का मेयार है। हुकूमत ने इस अमल को शुरू करने के लिए काफी सख्त सफाई प्रोग्राम नाफिज किया। इन इकदामात में कोयला हीटिंग से दूर जाना, फैक्ट्रियों को शहर से दूर मुंतकिल करना, इखराज के इंतहाई मजबूत मेयारात को नाफिज करना, निगरानी के मेयारात की निगरानी करना और अदम तामील की सूरत में भारी जुर्माने आयद करना और अवामी नक्लो हमल को कम इखराज के इख्तियारात पर मुंतकिल करना शामिल है। बीजिंग को बेहतर मेयार की हुआ हासिल करने के लिए सालों की मुस्तकिल और आला तरजीही कार्रवाई ओहे में वक्त लगा।
कुछ अंदाजों के मुताबिक शहर में अब शहर के रिहायशियों की मुतवक्के ज़िंदगी में कम अज़ कम 2 साल का इजाफा किया है। मैंने सेहत के अखराजात में तब्दीलियों के तखमीने नहीं देखे हैं, लेकिन मुतवक्के उम्र के तखमीने सेहत की तरफ से भी लागत की बचत की निशानदेही करते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां हमारे पास लाहौर के शहरियों के लिए निजी हल दस्तयाब नहीं है। जो लोग उसकी इस्तेतात रखते हैं वो अपने घरों और गाड़ियों में एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, लेकिन क्या अब बच्चों और बड़ों की नकल व हरकत को सिर्फ इमारतों और कारों तक महदूद कर सकते हैं? वाकई नहीं। जो लोग नकल मकानी कर सकते हैं वो साल के ज्यादा आलूदगी वाले अरसे के लिए दूसरे शहरों में मुंतकिल हो सकते हैं या उन औकात में अपने बच्चों को मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग इस तरह के हल बर्दाश्त कर सकते हैं? और ये हल स्कूली तालीम और काम वगैरह के तकाज़ों को देखते हुए बहुत अमली नहीं है। लिहाजा इस मामले में लोग बहुत कम कर सकते हैं, जैसा कि सेहत की देखभाल, तालीम और यहाँ तक कि पीने के काबिल पानी की फराहमी से मुताल्लिक मसाइल के मामले में होता है। इन सूरतों में जो लोग कर सकते हैं वो निजी अस्पतालों, निजी स्कूलों और बोतल बंद पानी की शक्ल में निजी इंतजाम में मुंतकिल हो सकते हैं, लेकिन हम अब भी निजी सांस लेने के काबिल हुआ के हल से कुछ दूर हैं। उम्मीद है कि लोगों को इस समत में जाने पर मजबूर करने के बजाय हुकूमत हरकत में आएगी और सबके लिए अवामी हल फराहम करेगी। स्कूलों को बंद करने और दफातर को घर से काम करने के ज्यादा प्रोग्रामों का इस्तेमाल करने पर मजबूर करने जैसे कलील मुद्दती और स्टॉप गैप इंतजामात चीजों को तब्दील करने के लिए काफी नहीं होंगे। हो सकता है कि ये अच्छी इमदाद हो और हुकूमत को कुछ जगह भी मिल जाए, लेकिन ये एक तवील मुद्दती मंसूबे का मुतबादिल नहीं हो सकते जिस पर सख्ती से अमल दरामद और निगरानी की जरूरत हो। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इस मरहले पर कुछ न करना सूरत हाल को मजीद खराब करने के मुतरादिफ है। मजीद फैक्ट्रियां खुलती रहेंगी, ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर आती रहेंगी और आलूदगी न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। ये बात हुकूमत को मालूम है। अगर ये जानने के बाद भी मकामी इंतजामिया, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो यह कत्ल के मुतरादिफ होगा। वो लाहौर के शहरियों को कत्ल कर रहे होंगे। जब तक हुकूमत संजीदा नहीं हो जाती और मुअस्सर हिकमत अमली वज़ा नहीं करती और उस पर अच्छी तरह अमल दरामद शुरू नहीं करती, लाहौर और मुल्क के दीगर आलूदा इलाकों के शहरियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बच्चों के लिए यह कीमत यकीनन बहुत ज्यादा है, लेकिन यह कीमत आखिरकार पूरी कौम को कम मुतवक्के उम्र और आला सेहत और दीगर अखराजात के लिहाज से बर्दाश्त करना पड़ेगी। अब तक हुकूमत इस मामले पर काफी हद तक मुतमिन रही है और उसने सिर्फ कॉस्मेटिक और सतही इक़दामात का ऐलान किया है। हमें ज्यादा गहरे और सख्त इक़दामात की जरूरत है। लेकिन क्या कोई हुकूमत इस तरह के इक़दामात की सियासी कीमत अदा करने और उनके मुअस्सर नफाज का इंतजाम करने के काबिल होगी? मजमून निगार इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। इक्तिसादी मुतबादिल और लम्स में मुआशियात के एसोसिएट प्रोफेसर। अखज़ शदा बतारीख 20 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.